They should not be in trouble. Chalo, this part is done. This part is done. I'll just go back and I'll talk about post order. When I'm talking about post order, let me first of all tell you, I purposefully skip post order just to keep it simple for you people. But post order is a complicated business. Post order is a complicated business, and there is some reason for that. There is some reason for that. Obviously, जो दो लोगों ने मुझको क्वेश्चन पूछा है, सिद्धार्थ एंड आई गेस जानवी, तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जिन्होंने ट्राई किया है, ओनली दोज पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव इज टू बी डन. बाकी लोग सुनो, समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है दैट इज स्टिल फाइन, एंड दैट इज स्टिल फाइन, एंड दैट वाज द रीजन यस्टरडे आई स्किप्ड इट. करेक्ट? तो ज्यादा दुखी मत होना. सो पीपल अगेन, जिन लोगों ने पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव, मैंने ये नहीं कहूंगा कि आपने किया है, आपने करने की कोशिश भी की है, देन एटलीस्ट यू मस्ट हैव सीन अ प्रॉब्लम. क्योंकि यहाँ पर इन दिस केस द प्रॉब्लम is bit tricky. The problem is bit tricky. And what is the problem? Shubham is saying that post order can be done using DFS algorithm. No way. You cannot do the post order using DFS algorithm. Go ahead. हाँ जानवी, अगेन अगर आपने गूगल के ऊपर सर्च किया है तो देर आर लाइक डिफरेंट अप्रोचेस आर अवेलेबल. सो सम ऑफ द अप्रोचेस इज दैट यू कैन यूज द either two stacks or yeah fear something like that. But again, if you are really tried it, listen carefully. जब आप लोग गूगल करते हो तो मैंने कहा ना, यूजुअली गूगल नन ऑफ द ट्यूटोरियल्स टीच यू हाउ टू बिल्ड योर कोड. आई होप यू एग्री. None of the tutorial, none of the videos always tell you how to build the code. They always explain you the code that they have written. And जब से मैंने डेटा स्ट्रक्चर चालू किया है, I'm always trying to tell you that it is always good idea that you learn in probably in a more difficult way. What is a difficult way? Try to build your own code. Try to build your own code, even though things are difficult. Over the period, your thought process is active, and that is, in my opinion, the main purpose of the data structure module. So even though you could, sir, हमने पूरा मॉड्यूल किया and we could make hardly 3-4 कोड. हम लोगों ने सिर्फ, सर आपने इतने सारे एल्गोरिथम पढ़ाए, हम लोग सिर्फ लिंक लिस्ट का कोड खुद से कर सकते हो. हम लोगों ने लिंक लिस्ट का कोड सिर्फ हम लोग खुद से कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, इवन दैट इज अ गुड और लेदर ग्रेट अचीवमेंट. अगर आप लोग कुछ भी कोड खुद से पेपर वर्क करके डेवलप कर पा रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट अभी 10 दिन मॉड्यूल चल रहा है सो सर 10 के 10 दिन का सर मैंने सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ. अगर आप सब कुछ कोड खुद से बिल्ड कर पा रहे हो, आई वुड से दैट इट इज योर जीनियस देन, एंड नो डाउट ऑन दैट. बट इफ इट इज नॉट, एटलीस्ट 50% ऑफ कोड, सर इतने कोड तो कम से कम हम लोग पेपर वर्क करके बिल्ड करके हम लोग वापस से खुद से कर पा रहे हैं. ट्रस्ट मी, इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज नाउ योर थॉट प्रोसेस इज एक्टिवेटेड. करेक्ट? जब आप लोग आगे जाओगे, एज द कोर्स प्रोग्रेसेस फर्दर, यू विल फाइंड दैट एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करने के लिए, या एक्चुअल टू बी फ्रैंक एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए इतने लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है. एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए इतने लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती है जितने लॉजिक की जरूरत कोर जावा या डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए लगती है. राइट? तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट, आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोगों ने वेब प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल किया, एडब्ल्यूपी का. जब लोग वेब प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत लॉजिक लगाया क्या? हाँ, वहां पर कोई लॉजिक नहीं है, वहां पर सिर्फ आपको आउटपुट देखना है. अच्छा ये ऐसे है, इस बटन को लेफ्ट में खिसकाओ, इस बटन को राइट में खिसकाओ, इसको थोड़ा ऊपर करो, इसके पैडिंग चेंज करो, इसका मार्जिन चेंज करो, इसका कलरिंग चेंज करो. ओह दैट लुक्स ब्यूटीफुल. तो वहां पर प्रोबेबली यू नीड बिट मोर आर्टिस्टिक सेंस देन द अल्गोरिदमिक सेंस. तो आई एम सेइंग दैट जब आप लोग एक्चुअल, yes, Pranit is saying that library management in Java was also too simple. That is what I'm trying to tell you, that actual application development में इतना लॉजिक कभी नहीं लगता है जितना लॉजिक डेटा स्ट्रक्चर में लगता है. तो जो लोग दुखी होते रहते हैं, सर हमारा लॉजिक वीक है, डेटा स्ट्रक्चर उनके लिए आइडियल मॉड्यूल है, वेयर दे शुड टेक फुल ऑफ एफर्ट्स, where they should take full of efforts. As more efforts that you take, you are probably more comfortable. हाँ सर, अभी मेरे को थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, आई एम सेइंग दैट पूरे मॉड्यूल में से 50% भी अगर आप लोग खुद से बिल्ड कर पा रहे हो, देन दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट. और 9-10 दिनों में अगर आप उसमें से 50% ग्रास्प कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? राइट? गुड.
ये सब लोग मेरे को पर्सनल मैसेजेस क्यों डाल रहे हैं? इट्स गुड। एनीवे कोई बात नहीं। देयर इज समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने के लिए कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। इज इट रियली फाइन? इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आई गेस मैंने कल परसों बताया था दैट आई टुक, मैंने एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 6-7 दिन आई हैव इन्वेस्टेड इन, ऑन वन प्रॉब्लम 6 to 7 days. So one problem 6 to 7 days. I'm very sure you people are definitely much more intelligent than me. You are not definitely spending, more than 6 days or something like that. I still recall my old days जहां पर मेरे को लिटरली रात को ऐसे सोते सोते याद आता था, अच्छा शायद इसका लॉजिक ये होगा। मैं उठता था नोटबुक लेके, तब लिख के रखता था शायद ये लॉजिक होगा, कल ट्राई करना है, क्योंकि कल तब मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। तो मैं किसी अपने रिलेटिव्स के घर पे जाता था और फिर वहां पर 1-2 घंटे बैठ के जो लॉजिक पेपर के ऊपर बनाया है, फिर उसको अच्छा अरे चलो करके देखते हैं इफ इट इज वर्किंग। तो आई एम सेइंग दैट प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करने के लिए कोई, यू रियली डू नॉट नीड अ कंप्यूटर, यू नीड अ थॉट प्रोसेस, यू नीड अ पेपर, यू नीड अ पेन, एंड यू नीड पैशन, एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। बट उसके बाद में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है दैट यू कैरी फॉर योर लाइफ टाइम। सो आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, और वो सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाता है इंजीनियर्स नो बेटर देन मी, करेक्ट? तो as far as exam is concerned, definitely you study everything, but when it comes down to the programming logic, do not make, what is that, 20 code, make 5-6 code that is good enough, but build them by yourself. Anyway, I'm just going back and talking about the post order logic. But how we will solve in this way in exam in slow mode? Madhuri, exam preparations you cannot do it in a slow mode. That is not really possible. If you are really asking me about exam, sorry, it is not really possible. So exam ke liye, exam must have its own way of preparations, correct? अगर आप लोगों ने बेसिक कोड ठीक से कर लिए, आई रियली डोंट थिंक, बेसिक कोड ठीक से कर लिए द वे आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, देन आई डोंट थिंक यू विल बी रियली फेसिंग दैट मच ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग एग्जाम इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। हाँ, जिन लोगों ने सारे के सारे कोड कॉपी पेस्ट ही किए हैं, दे विल ऑलवेज फाइंड इट डिफिकल्ट, नथिंग मच आई कैन डू, करेक्ट? एनीवे, जाने दो, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। इससे मैं कितना भी बताऊं क्या फर्क पड़ने वाला है। मैंने पहले दिन जो बताया था मैं अभी भी वही बता रहा हूँ। डू पेपर वर्क, कम अप विद योर ओन कोड, इन्वेस्ट लिटिल टाइम। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है, आई एम वेरी श्योर यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, यू नीड नॉट टू वरी अ लॉट, करेक्ट? एनीवे, पोस्ट ऑर्डर का लॉजिक, पोस्ट ऑर्डर का प्रॉब्लम पहले बताता हूं, बाद में लॉजिक के ऊपर सोचते हैं। कमिंग बैक, हैव अ लुक एट दिस। यू ऑलवेज यू नो दैट यू बिगिन विद द ट्रैप। ए पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या करना है? पहले सारे लेफ्ट खत्म करने हैं, पहले सारे लेफ्ट खत्म करने हैं, बाद में सारे राइट खत्म करने हैं, और जब लेफ्ट खत्म हो जाएंगे, राइट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में ये सर लेफ्ट खत्म हो जाएंगे, सारे राइट खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में उस नोड को प्रिंट करना है। Okay, if this is a logic to be managed, take a look at this. If this is a logic to be managed, what I will do, first of all, should I print 50? First in place, should I print 50? No way, क्योंकि ना तो उसका लेफ्ट खत्म हुआ है ना तो राइट खत्म हुआ है। तो what I need to do, I'll simply say that I'll go to the left. I'll go to the left. Should I print 30? Oh, not again. I should not print 30 क्योंकि ना तो उसका लेफ्ट खत्म हो गया ना तो राइट खत्म हो गया। Should I print 10? Oh, not again, because ना तो उसका लेफ्ट खत्म हो गया ना तो उसका राइट खत्म हो गया। See it carefully, and then again you go to the left. As you go to the left each time, as you go to the left each time, what you are losing? As you go to the left each time, what you are losing? Oh, you are losing not right, not right. The node itself, the node itself, क्योंकि आपको वो नोड भी तो प्रिंट करना है। प्लीज नोट दैट आपको वो नोड भी तो प्रिंट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो डेफिनेटली, सो यू आर लूजिंग 50, यू आर लूजिंग 30, यू आर लूजिंग 10। और आपको पता है अगर आपको 50-30-10 अगर मिल जाते हैं, अगर आपको 50-30-10 मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उसका राइट ले ही सकते हो, इसमें कोई बड़ा तीर नहीं करना है। सो एंड यू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर वैसे भी ये रिकर्सिव कोड को हम लोग नॉन रिकर्सिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट विल नीड अ स्टैक। वैसे भी लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर है, ये आपको चाहिए, एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी श्योर। हम लोग जैसे हम लोगों ने इन ऑर्डर का लॉजिक लिखा था कि पहले नोड को स्टैक के ऊपर पुश करो, गो टू द लेफ्ट, नोड को स्टैक के ऊपर पुश करो, गो टू द लेफ्ट, नोड को स्टैक के ऊपर पुश करो, गो टू द लेफ्ट, एंड फाइनली यू रीच टू द नल। नाउ सी द प्रॉब्लम, now see the problem, I'm trying to show you the problem. The problem is that now you reach to the null. As you reach to the null, what do you want to do? Definitely I want to pop the node.
चलो, I have popped the node. Please pay attention. I have popped the node. Once I pop the node, I reach to this. What it is indicating? What it is indicating is that उसके सारे left खत्म हो गए, और since उसके सारे left खत्म हो गए, that's why I came down to this node. Since उसके सारे left खत्म हो गए, that's why I came down to this node. Okay, that is good. Now the question is that, please pay attention. Now the question is that, now should I print 10? इसके सारे लेफ्ट खत्म हो गए, आई केम डाउन टू दिस नोड, शुड आई प्रिंट 10? ओ नॉट एट ऑल, क्योंकि हमें वापस से उसके राइट में जाना है, अभी तक उसके राइट खत्म नहीं हुए हैं। एंड डोंट फॉरगेट, इसके नीचे भी नोड हो सकते हैं, डोंट फॉरगेट दैट इसके नीचे भी नोड हो सकते हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो from here to here, but again there is a problem. What is the problem? The problem is that if I go from 10 to the right, if I go to the 10 to the right, again I'm going to lose the 10 itself. Please note, जब हम लोग लेफ्ट में जा रहे थे तो हमारा 10 मिस हो रहा था, जब हम लोग लेफ्ट में जा रहे थे तब हमारा 10 मिस हो रहा था, और अब जब हम लोग राइट में जा रहे हैं तो हमारा 10 फिर से मिस हो रहा है, ये फिर से मिस हो रहा है। तो व्हाट शुड आई डू? कॉमन सेंस इज दैट बिफोर आई गो अहेड, बिफोर आई गो टू द लेफ्ट, आई शुड हैव पुश 10 back onto the stack. Oh yes, I should again push 10 back onto the stack. And if I push 10 back onto the stack, please take a note, उसके बाद में let's say somehow you printed 20. After you printed 20, what do you want to do? After you printed 20, now what do you want to do? अब आपको 20 का कुछ नहीं करना है, तो जिसको आपने प्रिंट कर दिया है, यू कैन मार्क इट एज नल, एंड वंस यू मार्क इट एज नल कि दिस इज डन, नाउ यू कैन गो टू द, एंड यू कैन अगेन पॉप 10. Now you can again pop 10. Now tell me, in this particular case, now should I print 10? Now should I print 10? Yes, क्योंकि उसका लेफ्ट भी खत्म हो गया, उसका राइट भी खत्म हो गया, and then now you can print 10. Okay, that is common sense. But after I print 10, after I print 10, now what should I do? Now what should I do? Take a look at the diagram. What is the next that you need? 10 को प्रिंट करने के बाद में obviously I should pop the next element, or I should pop the next element, so I can pop the 30. Now if I'm popping 13, should I print 30? No, क्योंकि उसके सिर्फ लेफ्ट खत्म हो गए, उसके अभी तक राइट खत्म नहीं हुए, तो what should I do? Oh, I should go to the right. But again the same problem, if I go to the right, if I go to the right, what is the problem? I'm again going to miss 30. So what I should do? Again push 30 once again, push 30 once again, and then take drive to the right. Okay, then take drive to the right, and then somehow let's say that you have printed 40. Somehow you have printed 40, and after you print 40, what do you need to do? आप लोग नोट कर रहे हो, हर बार एक एलिमेंट प्रिंट करने के बाद में, हर बार एक एलिमेंट प्रिंट करने के बाद में मुझको नया वाला एलिमेंट स्टैक से पॉप करना पड़ता है। ओके, गो अहेड, लेट मी पॉप 30. नाउ टेल मी, शुड आई प्रिंट 30 नाउ? यस, व्हाई आई शुड प्रिंट 30? क्योंकि उसका लेफ्ट भी खत्म हो चुका है और उसका राइट भी खत्म हो चुका है। अगर उसका लेफ्ट भी खत्म हो चुका है, राइट भी खत्म हो चुका है, आई शुड प्रिंट 30, आई शुड प्रिंट 30. आप लोगों ने नोट किया है कि आपका हर एक नोड स्टैक के ऊपर 2 बार जा रहा है, और आपका हर एक नोड स्टैक के ऊपर से 2 बार बाहर आ रहा है, 2 बार पुश हो रहा है, 2 बार पॉप हो रहा है। पहली बार पुश कब हो रहा है? बिफोर यू गो टू द लेफ्ट, बिफोर यू गो टू द लेफ्ट, एंड दूसरी बार पुश कब होता है? बिफोर यू गो टू द राइट। मैं लॉजिक बिल्डिंग के स्टेजेस बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है, जो मैं सोच रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फाइनली बाद में मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, कोड लिखने में मेरे को कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दैट कैन बी ऑलवेज डन। वो मेरा कोड अभी इतने साल पढ़ा पढ़ा के वैसे वायर्ड हो गया है, बट देन यू सी द वे लॉजिक दैट यू कैन बिल्ड इट। ओके, आई अंडरस्टैंड दैट कि हर बार मेरा कोड, लिसन केयरफुली, मेरा हर एक नोड 2 बार पुश हो रहा है, लेफ्ट में जाने से पहले एक बार पुश हो रहा है, और राइट में जाने से पहले एक बार पुश हो रहा है। अच्छा, आपने और एक नोट किया, मेरा हर एक नोड 2 बार पॉप भी हो रहा है, 2 बार पॉप भी हो रहा है। पहली बार लेफ्ट खत्म होने के बाद में पॉप हो रहा है, पहली बार लेफ्ट खत्म होने के बाद में पॉप हो रहा है, और दूसरी बार राइट राइट प्रिंट होने के बाद में पॉप हो रहा है। लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हो रहा है, और उसके बाद में राइट प्रिंट होने के बाद में पॉप हो रहा है। दैट इज सेकंड थिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व। एक बात बताओ, लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में जब नोड पॉप होता है, लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में जब आपका नोड पॉप होता है,
तो आपको करना क्या होता है, लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में जब आपका नोड पॉप होता है तो आपको करना क्या होता है, आपको करना ये होता है कि उसको वापस से स्टैक के ऊपर पुश करना होता है, उसको वापस से स्टैक के ऊपर पुश करना होता है और बाद में राइट के ऊपर जाना होता है, ये बाद में राइट के ऊपर जाना होता है। और सेकंड, और जब वापस से जब लोग राइट से आते हो, ये जब राइट वाला ये सारे प्रिंट करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल सारे प्रिंट करके 90 भी मेरा प्रिंट हो गया, ये 90 भी प्रिंट हो गया, उसके बाद में मेरे को क्या करना होता है, उसके बाद में मेरे को क्या करना होता है, यस उसके बाद में मेरे को इसको पॉप करना होता है और पॉप करके मुझको उसको प्रिंट करना होता है, ये मुझको उसको पॉप करना होता है और मुझको उसको प्रिंट करना होता है। अब सिर्फ मेजर चैलेंज जो आपको यहाँ पर नोट करना है वो ये है, हाउ डू यू कीप अ ट्रैक कि ये जो नोड पॉप हो रहा है ये पहली बार में पॉप हो रहा है या दूसरी बार में पॉप हो रहा है। आपका जो नोड पॉप हो रहा है वो पॉप किसकी वजह से हो रहा है, कि फर्स्ट टाइम पॉप हो रहा है या फिर सेकंड टाइम पॉप हो रहा है। नाउ इफ यू कुड कीप अ ट्रैक कि आपका नोड पहली बार पॉप हो रहा है या दूसरी बार पॉप हो रहा है, आई गेस दैट विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, दैट विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। एंड ये शुभम, नाउ यू नीड some sort of a flag, either you need some sort of a flag, listen carefully, or you need to follow two stack approach। अब आपको जो भी करना है वो आप लोग करो। See, again, solution is not important, problem is important। I repeat, the solution is not important, problem is important। Trust me, trust me, if you want to be a good doctor, if you want to be a good doctor, you need not to be good at medicine। If you want to be good doctor, you need to be good into anatomy। जाने दो, आपके घर में कोई डॉक्टर्स होंगे तो उनसे बात करना, दे विल बी एबल टू टेल यू बेटर। सो knowing a lot of medicine and its chemical composition and then what they can do, so these are the solutions। but the solution समझने के लिए you need to first understand the problem, you need to first understand the disease, and that disease how it is impacting on your body। तो जहां जहां पर अच्छा मेडिकल पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले एनाटॉमी अच्छे से पढ़ाया जाता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड एनाटॉमी वेरी वेल, व्हाट इज एनाटॉमी, अच्छा गुड, सो आप भी मेरे जैसे लगते हो, बायोलॉजी। एनाटॉमी को हम लोग हिंदी में कहते हैं शरीर शास्त्र, लर्निंग द ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। आई होप गुरमुख दैट इज फाइन। तो पहले ह्यूमन बॉडी पढ़ो, फिर डिसीजेस का उसके ऊपर का इंपैक्ट पढ़ो, वेर यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन यू लुक फॉर विच मेडिसिन विल क्योर द डिसीज। I guess the same concept goes somewhere into the computers as well। You first understand a problem, you understand why the problem occurred, and then you try to solve it, and trust me, your solution will be much better than just कि नहीं आज बुखार है क्रोसिन ले लो। That is not the solution, leave it। तो I understood a problem and let us try to write a solution, let us try to write a solution, may not be a perfect one, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। The approach that I'm going to follow, listen carefully, approach that I'm going to follow, I'm going to have a kind of a boolean flag, boolean flag for each node। I am going to have a boolean flag for each node, and that boolean flag for each node indicate that whether the node is visited or not, visited in the sense printed or not, whether that node is printed or not। चलो ठीक है, तो शुरू करते मैं कह रहा हूं कि हर एक नोड के अंदर अभी हमारे पास नोड के अंदर 3 डेटा मेंबर्स हैं। डेटा है, पॉइंटेड टू लेफ्ट है, पॉइंटेड टू द राइट है। मैं कह रहा हूं एक और नोड, एक और मेंबर ऐड करो, and that member is like kind of printed या visited member, and it could be a boolean member, simply saying that it is false or it is true। now considering that कि आपके नोड के अंदर टोटल 4 मेंबर्स हैं एंड इनिशियली boolean visited जो है वो सबका false है, considering that visited सबका false है, let us just get started and talk about it one after another। get ready। so अब बेसिकली पहला लॉजिक क्या है हमारा, ये पहला लॉजिक क्या है हमारा वो हमको पता है। the first logic is similar to the in order। so trav is equal to root, we start from there, and then we are saying that while, मैं inner loop लिख रहा हूं, while trav is not equal to null, a trav is not equal to null, the trav is equal to, a trav is equal to trav dot left। so I am going to the left, और हर हर बार लेफ्ट के ऊपर जाते जाते किसको पुश करना है,
हर बार लेफ्ट के ऊपर जाते जाते किसको पुश करना है? यस, राइट. सो यू कैन सिंपली गो अहेड एंड यू कैन पुश द ट्रैव, you can push the trav onto the stack. So this code goes quite similar to that of in order. अब हमें क्या करना है? Obviously जैसे नल के ऊपर जाओगे, you have to pop a element. Okay, I am very sure I want to pop a element, but the problem over here is that trav, अब देखो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रहा है. प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो आपका एलिमेंट पॉप हुआ है वो पहली बार में पॉप हुआ है, मतलब लेफ्ट खत्म होने के बाद में पॉप हुआ है, या फिर राइट खत्म होने के बाद में पॉप हुआ है? आई यू आर गेटिंग माई पॉइंट? जो हमारा नोड प्रिंट हो रहा है, आप लोग प्रॉब्लम समझो, सॉल्यूशन में देता हूं, आप सॉल्यूशन के ऊपर प्लीज मत सोचना, यू जस्ट अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. ये जो पॉप हुआ है, ये लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है या फिर राइट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है, ये हमके सोचना है. अगर वो लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है तो मुझको क्या करना है? अगर लेफ्ट प्रिंट होने के बाद में पॉप हुआ है तो मुझको क्या करना है? मुझको वापस से उसको स्टैक के ऊपर डालना है, मुझको वापस से उसको स्टैक के ऊपर डालना है और फिर उसके राइट में जाना है, और फिर मुझको उसके राइट में डाल जाना है. एज यू अंडरस्टैंड दिस, हैव अ लुक एट दिस. तो सर मैं कैसे ट्रैक करूंगा? हैव अ लुक एट दिस, लिसन केयरफुली. जब ये पहली बार पॉप होगा, सीट केयरफुली, जब ये पहली बार पॉप होगा, पहली बार पॉप होगा, मैं कह रहा हूं पहली बार पॉप होगा मतलब 30 प्रिंट होने के बाद में पॉप होगा. जब ये पहली बार पॉप होगा, 30 प्रिंट होने के बाद में पॉप होगा, सो एट दैट टाइम माय राइट नोड इज नॉट येट विजिटेड. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. एट दैट टाइम माय राइट नोड इज नॉट येट विजिटेड. और जब दूसरी बार पॉप होगा, जब दूसरी बार पॉप होगा, तो आपने इस नोड को प्रिंट कर लिया है और उसके बाद में ये पॉप हो रहा है, ये उसके बाद में ये पॉप हो रहा है. आई होप यू गॉट दैट आल्सो. तो बाय लुकिंग एट द राइट नोड, लिसन केयरफुली, looking at the right node, i can guess I can guess, I can understand whether it is popped for the first time, whether it is not popped for the whether it is popped for the second time. So I can simply check over here. What I can check over here? If if trav dot right is not equal to null, मतलब पहले तो चेक करो उसका राइट नोड है क्या, पहले तो चेक करो उसका राइट नोड है क्या. और अगर राइट नोड है, अगर राइट नोड है तो ये चेक करो, एंड trav dot right dot visited, and I'm saying that right is not visited. If right is not visited, what is the meaning of this? If right is not visited, what is the meaning of this? If right is not visited, so it is popped for first time. It is popped for first time. All I need to do is that I need to push it onto the stack once again. So h dot push, and I can push it onto the stack once again. I can push it onto the stack once again, and then and then and then I can print it. Okay, no, sorry, and then I can go to the right. Trav is equal to trav dot right. I hope that is good. Chalo, I have done that. But otherwise, if you have popped it for second time, if you have popped it for second time, what is the meaning of this? If you have popped it for second time, इसका मतलब क्या है? There are likely chances that इसका राइट खत्म हो चुका है, और अगर इसका राइट खत्म हो चुका है, अब क्या करना है? Yes, go ahead and simply say print it. Print trav dot data. अभी आपने इसको प्रिंट कर लिया ना? अगर आपने इसको प्रिंट कर लिया, प्लीज मार्क इट दैट यस दिस इज विजिटेड. ए विजिटेड is equal to true. A mark it as visited. Yes, it is visited. That is second thing that we have done. And what is third thing? Go ahead. What is third thing? What is third thing? आपने visited true कर दिया. अब आपको अगला वाला पॉप करना है. अगला वाला पॉप करना है. I can simply say make trav is equal to null. Make trav is equal to null, because if the trav is equal to null, there are likely chances are that you are going to pop the next time. अगर आपने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर का पेपर वर्क किया है तो आप लोगों ने नोट किया होगा, जब जब नल हो जाता है तो वापस से अगला वाला पॉप हो ही जाता है. आई होप यू रिकॉल दैट. करेक्ट. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट जस्ट मेक इट नल, तो ऑटोमेटिकली वापस से पॉप के कोड में आ जाएगा, जिस तरह से हम लोग लूप लिखते हैं उसके हिसाब से. एंड इफ यू अंडरस्टूड दैट, लेट अस जस्ट क्विकली गो अहेड एंड लेट अस कंप्लीट द आउटर लूप एज वेल. यहाँ पर एक इफ का कंडीशन लगा दूं ऑन अ सेफ्टी
measure. If stack is not is if the stack is not empty, if the stack is not empty, then and only then you pop the element. आफ्टर पॉपिंग द एलिमेंट चेक उसका राइट अगर विजिटेड नहीं है, उसका राइट अगर विजिटेड नहीं है, इस नोड को वापस एक बार स्टैक के ऊपर डालो और उसके राइट में चले जाओ. एंड आफ्टर दैट द सेकेंड, अगर उसका राइट विजिटेड है, अगर राइट विजिटेड है, उस नोड को प्रिंट करो, उसको विजिटेड मार्क करो और उसको नल करो. एंड देन कीप ऑन डूइंग दिस एंड यू ऑलरेडी नो द कंडीशन. while trav is not equal to null or stack is not empty, or stack is not empty, I'm saying that you just keep repeating this. That's it, all you need to do. So is this code done? Yes, this code is done. So we have built the entire code. So this code is working, I believe. मैंने बहुत दिनों के बाद में लिखा है, but still I believe it should work. तो आप लोग चाहो तो हम लोग क्विकली एक पेपर वर्क करते हैं, जिसको मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ. जिसको इंटरेस्ट होगा वो वापस से वीडियो देखना. वैसे भी मुझको ये पढ़ाना नहीं था, और अगर मुझको पढ़ाना होता तो शायद मैंने आपको होमवर्क भी दिया होता. मैंने जानबूझ के आपको होमवर्क भी नहीं दिया था. नाउ सिंस फ्यू स्टूडेंट, you know, they go ahead and what is that, and then try to do it by themselves just to respect their hard work. मैंने ये वापस से दिखाया. So if anyone is really interested in, नहीं नहीं सर अभी इसको जानना है, वापस से वीडियो देखना, पता चल जाएगा. I'm just going through the entire paperwork step by step. तो going through the entire paperwork step by step, कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं. A trav is equal to root, and please stay focused. Okay, let us begin. Trav is equal to root and the story begins. The condition is true. Let us go to this. Let us go to this. Is it not working? What is not working? Sachin, is it not working or it is not working? आप लेने वाले नहीं थे तो मतलब, Sachin, I'm not very clear what exactly you are asking for. मैंने कहा ना, since few students have done it by themselves, तो I thought of like I'll show you so that at least उन्होंने इतने efforts किए, उनके efforts waste नहीं जाने चाहिए. That's it, nothing else. Let us just go ahead. और मैं कहाँ पर था? S dot push trav. S dot push trav. So चलो 50 को push करते हैं and we will go to the left and then go to the left. Again, trav is not equal to null. Again, let us push 30 and again go to the and again go to the left. All right. Again repeat the process. You push 10 onto the stack. Again you push 10 onto the stack and again you go to the left. As you go to the left, and now it is null. Oh, now it is null. So since it is null, inner loop condition is false. You come out. If stack is not empty, if stack is not empty, trav is equal to h dot pop. Okay, you pop the element. But even though you pop the element, see it carefully. Even though you pop the element, हमें print नहीं करना है. हमको ये check करना है. A trav's right is not equal to null. Oh sorry, trav's right is not equal to null, and its right is not visited. I find that इसका right null भी नहीं है और right अभी तक visited भी नहीं है. नहीं है तो क्या करो? Go ahead, push it once again, and then go to the right. So push trav onto the stack and then go to the right. Okay, then I go to the right, and this much part is done. Let us just come out of this loop. Let us come out of this and let us again go ahead. Again you find that trav is not equal to null. While trav is not equal to null, s dot push और s dot push, अब किसको push कर रहे हैं हम लोग? I hope आप लोग कर रहे हो, try कर रहे हो. Let's push 20 onto the stack. Let us push 20 onto the stack and then let me go to the left of it. Okay, I'm going left of it. The inner loop condition is false. Come out of the loop. Stack is not empty. Trav is equal to s dot pop. And now let me pop the topmost element. I'm popping the topmost element. Good. Have a look at this. अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, इसमें से पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 20 के राइट में कुछ नहीं है. प्लीज पे अटेंशन. 20 के राइट में वैसे कुछ भी नहीं है, एंड सिंस 20 के राइट में कुछ नहीं है, आई से दैट अगर 20 के राइट में कुछ नहीं है, आई शुड गो अहेड, आई शुड गो टू द एल्स पार्ट एंड यू शुड सिंपली से दैट printf trav arrow data. Okay, let me just print trav data and I'm printing 20. Okay,
I'm printing 20. If I'm printing 20, if I'm printing 20, that is good. Mark it as visited. A 20 को हम लोग ने visited करके mark कर दिया. And then you make trav is equal to null. Then you make trav is equal to null. Trav is equal to null. Come out. The outer loop, the first condition is false, but the second condition is true. Since second condition is true, stack is not empty, you go inside. Inner loop condition is false. Inner loop condition is false. If stack is not empty, trav h dot pop. Okay, let me pop. Let me pop the topmost element. A topmost element is 10. And now you find that इसका right null नहीं है, but इसका right null नहीं है, लेकिन इसका right visited है. Since its right is visited, the condition is false. Go to the else part. Printf trav data. Okay, you print 10. A 10 is printed. That is good. After 10 is printed, you mark it as visited and make it equal to null. Mark it as visited and then you make it equal to null. As you make it null, see, go ahead. The outer loop, second condition is true. Inner loop condition is false. You are going to pop the next element. You pop the next element, which is the next element that you have popped. Or next element that we have popped is 30. As I have popped 30, pay attention. As you have popped 30, you see that a 30 का right node है. 30 का right node है, लेकिन वो visited नहीं है. Since वो visited नहीं है, what is to be done? What is to be done? Go ahead, push 30 into the stack once again, push 30 onto the stack once again, and then you go to its right, or you go to its right, and then you repeat the procedure. You find that trav is not equal to null. While trav is not equal to null, push it onto the stack and go to the left. So just repeat one by one. So you put 40 onto the stack and then you go to the left. You go to the left, inner loop condition is false, come out. If stack is not empty, you pop the topmost element. Okay, I pop the topmost element. I pop the topmost element, it is 40. The 40 is popped. 40 is popped. You find that it doesn't have right node. It doesn't have right node. Print that node, mark it as visited, and make trav is equal to null. Okay, go ahead, print that node, mark it as visited, and make it null. Make it null. Okay, good. You continue further. The outer loop, second condition is true. Inner loop condition is false. You go ahead and you pop the next element. I pop the next element, 30. A 30 is popped. 30 is popped. Once 30 is popped, once 30 is popped, I want to check again. इसका जो right node है, a right node is already visited. Since right node is already visited, I just go down. मुझको print करना है, मुझको उसको mark as visited करना है, और मुझको उसका trav is equal to null करना है. Let me just go ahead. अभी अभी मैंने 30 pop किया है, 30 pop किया है. 30 को print कर दो, mark it as visited, and then make again trav is equal to null. Okay, that is good. Done. You continue further. Again, inner loop condition is false. Stack is not empty. You pop the next element. You pop the next element. I find that 50. 50 is popped. 50 is popped, but the 50's right is not yet visited. If 50's right is not yet visited, what is to be done? What is to be done? Push 50 once again onto the stack. Push 50 once again onto the stack, and then go to its right. Oh, you go to its right. I go to its right. You continue further. And then again you repeat the procedure. Inner loop condition is true. अब आपको क्या करना है? You want to keep going on to the left by pushing the element onto the stack. Keep going to the left, pushing the element onto the stack. So continue further. Put 90 onto the stack and go to the left, and go to the left. Put 70 onto the stack and then go to the left. Put 60 onto the stack, 60 onto the stack, and then go to the left. Okay, that is good. चलो यहाँ तक भी ठीक है. We have just put everything on a stack and we go to the left. The inner loop condition is false. You come out of the loop and check. Okay, trav is equal to h dot pop. If trav is not equal to null and trav is not visited, so पहले तो pop करते हैं. ये pop किसको करते हैं? 60 को pop करते हैं. 60 को pop करते हैं. But I found that 60 का जो right है, ये 60 को right है ही नहीं. 60 का right है ही नहीं. ये 60 का right है ही नहीं. What is to be done? What is to be done? Go ahead, print 60, mark it as visited, and after marking it as visited, make it equal to null. Okay, you go ahead, and again, outer loop, second condition is true, inner loop condition is false. Again, you pop the next element. Next element that you have popped is 70. A 70 is popped, that is good, but you see that 70 is right. 70 is
अभी आपका 70 पॉप हुआ है, but 70 is right is not yet visited. What is to be done? What is to be done? Go ahead, again push 70 onto the stack, again push 70 onto the stack, and then go to its right. Okay, you go to its right and you repeat the procedure once again. Again, while trav is not equal to null, I want to push it onto the stack. Continue further, you push 80 onto the stack, and then you go to its left. You go to its left, the inner loop condition is false. You come out of the loop, you pop the topmost element. The topmost element is 80. Topmost element is 80. You popped it, and you continue further. You popped it, you popped it, and then what do you find? You find that 80 के right में कुछ node है ही नहीं. Okay, 80 के right में कुछ node है ही नहीं. You go to the else part. What do you want to do? Oh, I want to print 80. I want to print 80. I want to mark it as visited. I want to mark it as visited, and then I want to make trav is equal to null. If I'm making trav is equal to null, I understand that. I understand that it will continue further. The inner loop condition is false. You pop the next element. Or next element that I have popped is 70. You have popped 70. Good thing is that the 70s right is visited. Since 70s right is visited, again, what is to be done? Go ahead, print 70, print 70, mark it as visited, mark it as visited, and then, and then, and then make it equal to null. Okay, you continue further. You continue further. What is next to be done? The next to be done, again, you pop the next element. You pop the next element. You pop the next element. Next element popped is 90. Next element popped is 90. 90 is out. But you find that 90 is right. A 90 is right is not yet visited. Oh, 90 is right is not yet visited. So go ahead, put it onto the stack, put it onto the stack, and then you go to its right. You go to its right, and you again continue the process. Again, you continue the process. While trav is not equal to null, push it onto the stack and then go to its left. Or push it onto the stack and then go to its left. Okay, done. You continue further. If stack is not empty, oh sorry, stack is not empty, you pop the next element. You pop the next element. This has been popped, and then you find that इसका right node है ही नहीं. अच्छी बात है, इसका right node है ही नहीं. तो let us go to the right. What is to be done? इसका राइट नोड नहीं था. व्हाट इज टू बी डन? गो अहेड, गो अहेड, इसको अपने पॉप कर लिया है, इसको प्रिंट कर लो, एंड आफ्टर प्रिंटिंग दैट यू मार्क इट एज विजिटेड, मेक ट्रैव is equal to null, make trav is equal to null, and you continue the process. Again, your stack is not empty. You find that but trav is equal to null. Okay, stack is not empty. You pop the next one, and next one I popped is, let's say, 90. I popped 90, but now I see that 90's right is already visited. Since 90's right is already visited, what is to be done next? Okay, a 90's right is already visited. What is to be done? Go ahead, print 90, print 90, print 90, mark it as visited, and make it equal to null. Make it equal to null. And then you continue your process further. What is the next job? Okay, you continue the process. Again, I find that, again, I find that the trav is null, but the stack is not empty. Go ahead, pop the next element from the stack. Next element push pop from the stack is 50. Okay, it is 50. Here you find that 50's right is now visited. Since 50's right is now visited, go ahead, print 50. Yes, print 50, mark it as visited, mark it as visited, make trav is equal to null. Make trav is equal to null, go back and check the condition of the outer loop. Trav is equal to null, condition is false, stack is empty, again condition is false. You come out of the loop and just check, is it your output of, is it your output of post order? Now you ask the question, so which approach is good? ये visited वाला flag वाला approach good है या टू स्टैक वाला अप्रोच गुड है? आई वुड से दैट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. विच एवर लॉजिक दैट यू फाइंड इट कंफर्टेबल, यू फॉलो दैट. यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम. वंस यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, देन सोल्यूशन क्या अप्लाई करना है, जो आपको ठीक लगे वो सोल्यूशन आप लोग अप्लाई कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई होप जिन जिन लोगों ने कोशिश की थी, नाउ दे आर हैप्पी, दे गॉट एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ दिस. या गुड. चलो कोई बात नहीं. तो you found that what we have tried is
Yes. Somebody is saying that. Gaurav is saying that recursion is the best. Yes, absolutely recursion is the best. यही तो मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि recursion is really good. अब जिनको recursion पसंद नहीं आता वो लोग पोस्ट ऑर्डर नॉन रिकर्सिव कर ले, recursion से प्यार हो जाता है. You always see that. Anyway, let us just go ahead. That was all about how we can do this. इस कोड में और भी कुछ इश्यूज है. मतलब ये कोड चलेगा, डोंट वरी, ये कोड चलेगा, लेकिन कुछ इश्यूज दैट यू विल बी फेसिंग अगर आप इसको प्रॉपरली पूरा एंड टू एंड करते हो तो आई वुड से दैट प्लीज गो अहेड. इफ यू एट ऑल फेस एनी प्रॉब्लम, लेट मी नो आफ्टर द लेक्चर, नॉट इन बिटवीन द लेक्चर. अच्छा, गुरमुख को रिकर्शन से प्यार हो गया. All the best. That is good. Anyway, let us continue further. So that was all about like post order without recursion. Let us go ahead and let us talk about next. ये मैं टाइप नहीं करने वाला हूँ, वैसे मैंने कोड लिख के दे दिया है. से ये कोड चलेगा, यू डोंट वरी, एक बार तो आराम से चल जाएगा. देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, राइट?